Hi guys, welcome to OAS Hub. केमती अछंती आपण माने? सोशियोलॉजी पीओ का टिके डिले हेला क्लास ओके जो माने सुनि पारछो गोटे कमेंट दियो मो आवाज आसुची समस्त को एम आई ऑडिबल गाइज मोर आवाज क्लियरली सुबुची ओके स्टार्ट नाउ तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल पीओ को डिस्कशन हमें ऑलरेडी 6-7 क्वेश्चंस कर देथिले आज किछु आई होप तो माने एंजॉय करछो एवं तुम संग साथी से शेयर करथुबो वीडियो जो माने सोशियोलॉजी मेंटरशिप नेबे तांकर सब लास्ट 10 वर्ष पीओ क्यू सॉल्व हबो यूनिट वाइज सॉल्व हबो एंड एज वेल एज जो माने फाउंडेशन बेज भी नेबे तांको पई भी ये सब इनक्लूड रहइबो जो माने फाउंडेशन नेबे तांको पई 10 वर्ष पीओ क्यू सॉल्व हबो यूनिट वाइज आपनकर क्वेश्चन डिस्कस हबो एंड एज वेल एज तांकर बेसिकली डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी मोडे स्टार्ट करूची सेटा भी चाहे समस्ते पारिबे तो माने पढ़ी चंती तांको पई ये हबो तो मते गोटे कमेंट सेक्शन कहि दियो कि समस्ते जॉइन कर जाइछो समस्ते जॉइन कर जाइछो ओके आमे आ विलंब न करी सो आमे क्वेश्चंस देखिथिले जोरी कि पीएससी मेंस मेंटरशिप जो माने मेंस पई प्रिपरेशन करूचंती एई थरो चाहे प्रीलिम्स रो हो या न हो एनी हाउ यू हैव टू प्रिपेयर जदि तुमे ठीक से थरे भल से पढ़ी थिबो ताले यू कैन जॉइन दिस कोर्स मु ऑनलाइन रे केवल 30 स्टूडेंट एक्सपेक्ट करूची दिस इज प्योरली ऑनलाइन क्लासेस बट ऑफलाइन आसी मीट करि परिबो गाइडेंस नै सो एथिरे मु 50 स्टूडेंट एक्सपेक्ट करूची एवं 50 स्टूडेंट जो माने 50 स्टूडेंट आसीबे तांको मु नजर रखी काने अधिका स्टूडेंट मु नेबिनी सो दैट ले तांको से बळे एफर्ट देई होबनी तांको पछरो ऑनलाइन रे मेंटरशिप रे एवं फाउंडेशन बैच रे ऑफलाइन रे 20 स्टूडेंट दरकार एवं ऑनलाइन रे 30 स्टूडेंट सो दैट आई कैन मैनेज आई कैन गिव एफर्ट टू तो ये क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करथिले 2023 रो ये क्वेश्चंस व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड इज ऑब्जेक्टिव phenomena discuss the concept of pattern variable example हमें laboratory देखिथिले define social distance and describe the important characteristics what is the difference between sects and cults ये मध्ये हमें देखि सारथिले okay what is the relationship between authority and legitimacy relationship authority and करो एंड हमें ऑलरेडी डिस्कस करथिले पूरा भल से मैक्स वेबर रो कंसेप्ट मैक्स वेबर ही बेसिकली तार उपरे एंड रेफरेंस बिहेवियर ये भी हमें रोबोट के मैटर हमें
Then what do you understand by content analysis? Is it qualitative or quantitative or discuss? So এইଠୁ ଆମେ start କରିବା 6ଟା questions ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ discuss କରିଥିଲୁ ଦୁଇଟା ସେସନରେ ଆଜି ଥର୍ଡ ସେସନ ଆମର ଚାଲିଛି ତ ଡରଖାଇମ୍ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ଆଜି ଥିଙ୍କର mainly ଆମେ ପଢିବା content analysis ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଡରଖାଇମ୍ ପଢିବା patterns argument deviance and ଦେଖିବା ଦେନ୍ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସର क्लास थ्योरी आज थिंकर दी तीन देखिए जोटी आपण मानक बहुत ही हेल्प हम केमी कौन लिखुंट बादल गुड इवनिंग प्रणाम प्रणाम केमी अच्छा समस्ते कमेंट दिंतु जार जो रिलेटेड डाउट या सोशियोलॉजी ऑप्शनल रिलेटेड डाउट जार भी किसी प्रॉब्लम रहिबो लेट मी नो ओके तो आम ये क्वेश्चंस ग्रुप भी आपण मैंने पैटर्न भी जी नुआ प्रिपेरेसन कर पैटर्न भी देखिपर पेर 12टा क्वेश्चन 10टा करिया पड़ियो ग्रुप बी रे 6टा क्वेश्चंस दुईटा करिया 5टा करिया पड़ियो एवं 6टा क्वेश्चन जोटा कि एटा 20 मार्क लेखा एटा 15 मार्क लेखा तो से अनुसार मैं सॉल्व करूछु व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेंट इट क्वालिटेटिव और यूनिट 3 रो पार्ट तो पेपर 1 तो इन सोशियोलॉजी सर्च देखिवा कंटेंट एनालिसिस चला सिस्टमैटिक मेथड रे हम स्टडी करि परिबु एंड इंटरप्रेटिंग कंटेंट तो कंटेंट कौन है कहीं कंटेंट को जदि एनालिसिस एनी काइंड ऑफ कंटेंट को एनालिसिस करके आम सोशियोलॉजिकल रिसर्च काम लगे न्यूज स्पीच कंटेंट दीज आर फिल्म्स एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पोस्ट आर ऑल कंटेंट जमती कि बर्तमान जमाना है कंटेंट क्रिएशन ना कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब रे कंटेंट क्रिएट करूँ और अदर रिटेन और विजुअल मटेरियल तो कंटेंट मैंने बेसिकली कौन कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन ही पारे या जो कंटेंट पर्टिकुलर ये केमती एनालाइज एवं से जो एनालिसिसटा क्वालिटेटिव थाए या बहुत तो या ऊपर डिस्कस करने आगे को डेफिनेशन देखा सो इंट्रोडक्शन रे सोशियोलॉजिकल जब रिसर्च करू सोसाइटी को साइंटिफिक करू कंटेंट को एनालिसिस करवा इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस स्टडी so content analysis is a systematic method studying and interpreting content of content तो content थ्रू रे कम्युनिकेशन हाट मानि नियो गोटे जगह जण गोटे जगह को गला सेठी शेष लोक मान शुणिला शुणी सेटा को आसिला कोन कंटेंट और स्पीच फिल्म्स एडवर्टाइजमेंट अदर रिटेन एंड मटेरियल तो बेसिकली कौन करे यही गोटे कंटेंट रु हमें जदि एनालिसिस कंटेंट रु जदि आइडेंटिफाई करियो गोटे पैटर्न रिसर्चर आइडेंटिफाई ए पैटर्न themes and meanings pattern and meanings within pattern and meanings ओके तो रिसर्चर गोटे कंटेंट को एनालिसिस करला परे से तार भाया कंटेंट कौन चाहूँगी कंटेंट कौन इंटेंट तार थीम कौन जापर तो डेफिनेशन जो आसो से आम पार्ट को आम इंक्लूड बेरेलसन 1950 कौन कहले ना कंटेंट एनालिसिस ऑब्वियसली और फर्स्ट तीन टा यूनिट आमको कहमी सोसाइटी को आम सोशियोलॉजिकल या साइंटिफिक सोसाइटी को केमती एनालाइज कर तो कंटेंट एनालिसिस द रिसर्च टेक्निक कौन पाई रिसर्च टेक्निक यूज करा जाए फॉर ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक क्वांटिटेटिव description of the manifest and quantitative description of the manifest and of then Holstein 1960 Holstein 1960 any technique for making inference any technique for making
by objectively and systematically, by objectively identifying specified characteristics. कौन कहगला सो प्रथम ये बेरेलसन कहले कौन ना ये कंटेंट एनालिसिस गोटे रिसर्च टेक्निक जोटा कि ऑब्जेक्टिव स्टडी सिस्टमैटिक एंड एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव माने डाटा डेस्क्रिप्शन कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन रु हमें पाई परिबा ताले हॉलस्टिक कहले कौन एनी टेक्निक ऑफ मेकिंग इनफ्रेंस माने सारांश बाहर करिबा केमिति बाहर करिबा ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमैटिकली ये भी सेम पाखापाखि कहले क्या कहले ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टम आइडेंटिफाई स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसेजेस कंटेंट अछि गोटे कंटेंट रो हमें जो एरिया रिक्वायरमेंट अछि हमें बहुत बड़ न्यूज पेपर सिविल सर्विस पई जो कंटेंट अछि हमें सिरु आउ सब हमें छाड़ी देले जोटा कि हमें नेसेसरी हम काम रे आसीबो सिमिलर thus content analysis transform qualitative textual material into data quality textual into data that can be analyzed understand social meanings and communicate तो माने एक्चुअली कंटेंट एनालिसिस नथिबे ताले एटा को टिके डिफिकल्ट हबो बट एबे देखि दियंतु एमिति आपन को आइडिया भी आसी जिवो तो ये कोन करे गुटे ला कि ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन दउची एंड एज वेल एज क्वालिटेटिव मटेरियल भी मध्य ये एनालिसिस थ्रो रे क्वालिटेटिव टेक्सचुअल मटेरियल इनटू डाटा गोटे टेक्स्ट को डाटा रे मानि नियो गोटे टेक्स्ट हमें पढ़ी देकी आमे गोटे महानदी रिवर ऊपर गोटे एडिटोरियल आसला आमे ताको पढ़ी देले तार इंपोर्टेंट टेक्स्ट गुडा को क्वालिटेटिव टेक्स्ट गुडा को कि कौन कौन डिस्प्यूट अच्छी कौन जगह बेरेज होती कौन कौन तार ट्रिब्यूटरी अच्छी कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटरी अच्छी सब जो डाटा को आम बाहर कर आनले एंड एनालाइज कले मीनिंग एंड कम्युनिकेशन डाटा को आसिक नेचर ऑफ कंटेंट एनालिसिस कैन बी qualitative or both depending on the research getting or not ओके और कार किसी डाउट अच्छे जी जार डाउट अच्छे मत लेट मी नो मस्त गोटे लाइक कर शेयर कर सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंटेंट सो क्वेश्चंस देखो क्वेश्चन थिला इज इट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ओके और क्या हमें ये कले बोथ क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव और बोथ कौन हम से डिपेंड करे ये रिसर्च करुच्ची रिसर्च पर्पज कौन एंड एप्रोच से क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस फोकस ऑन काउंटिंग क्वांटिटेटिव माने क्वांटिटी काउंटिंग measuring the frequency and measuring the frequency certain words treats communication as data that can be quantified that can be quantified communication is data that can be for example देखियो counting how many times development or poverty appears in elections एग्जांपल देखिए केते थर क्वांटिटेटिव सिंपली बुथ कि डेवलपमेंट कथा मोदी जी भाषण देइचंती डेवलपमेंट किंबा पॉवर्टी विषय केते थर कोइ इलेक्शंस पे काउंट करिया तला क्वांटिटेटिव एनालाइजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्सेस फीमेल कैरेक्टर इन द एडवर्टाइजमेंट बुझल ने क्वांटिटी गोटे एडवर्टाइजमेंट दिया है जे देखले कि मेल केते जण छ फीमेल केते जण छ या मेल ऊपर बेसी कहै या फीमेल ऊपर कोन कहै सो तार प्रोपोर्शन देख एडवांटेज कोन ना ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वे allow statistical analysis and comparison suitable for studying media trends or propaganda suitable for studying media trend and propaganda बुझियला नेक्स्ट
यार एडवांटेज देखले क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो बहुत क्वांटिटेटिव ही परियो एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कोन द फोकस ऑन इंटरप्रेटिंग द मीनिंग को क्वांटिटेटिव रे काउंटिंग करियो नंबर ऑफ टाइम्स कोन करा हैछि एठी इंटरप्रेट करियो मीनिंग कॉन्टेक्स्ट एंड थीम मीनिंग कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरलाइंग थीम rather than counting the frequency. Examine the latent content. Examine the latent content, the implied or symbolic meaning. Analyzing how nation or identity present in the scene. Interpreting emotional tone, केमिति से कहूची देश पाई, or ideological bias in newspaper editorials. Emotional tone, ideological bias in the qualitative. माने they are interpreting the meaning, not counting. क्वालिटी एठू बाहर क्वांटिटेटिव रे नंबर ऑफ टाइम्स किए कते यूज करे सेतरे आ इमोशंस को बुझी नाही देयर इज नो इमोशंस ओके कैप्चर द डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी को ये कैप्चर करि पारे यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चरल सिंबल्स एंड नैरेटिव तो मिक्स्ड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है से क्वांटिटेटिव मेथड भी करिवो सेथरे फ्रीक्वेंसी देखिवो पैटर्न्स देखिवो एंड एलो जे क्वालिटेटिव देखिवो सेथरे से कोन ना इन द एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग बिहाइंड द पैटर्न ओके तो ये सोशियोलॉजिस्ट बूथ अप्रोच मेनली यूज करती सो दैट दीटा को बैलेंस है लेट्स से एज्यूम करो स्टडी ऑफ ए न्यूज कवरेज ऑन वुमेन्स इशू कोन हे पारे ना क्वांटिटेटिवली काउंट द नंबर ऑफ न्यूज स्टोरी क्वांटिटेटिव हेला क्वालिटेटिव हेला ना लाइक हाउ वुमेन आर पोर्ट्रेड क्वालिटेटिव क्लियर गाइस की पारुचो कार किसी डाउट अछि निवन ओके सो बूथ केमिति हेल्प हेबेर विथ एग्जांपल सो देखो मु तुमको जदि छोट पिला भी किए होइछ समस्त चाहिले बुझी पारिबे एग्जांपल्स द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग द आंसर राइटिंग इज but need to develop not going to develop within a night and knowing things and writing things also if you know okay but you need to write also write in a systematic way for that you need practice the number of day you will practice number of times you I am starting with a daily answer writing program unit wise join okay so mix देखले so application कौन ना media and communication study political propaganda and public opinion analysis of cultural values ideologies and stereotypes study of social media trends historical and archival so content analysis is a versatile sociological research used systematically study communication. It can be qualitative, or combination of both, depending on the whether the research seek to meet. Interpreting the meaning is qualitative. Measure the frequency is quantitative. By blending both approach, sociologists gain a deeper understanding of how media communication reflect and shape पूरा क्लियर हो गला कंटेंट एनालिसिस एते बढ़िया टाइप रा में आंसर ले सो दैट एग्जामिनर तुमको नहीं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन डर्कहाइम डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ सुसाइड जानि छ डर्कहाइम डिस्टिंग्विश टाइप्स ऑफ सुसाइड टू the relation of the actor to the, okay ये डर्कहाइम तो डर्कहाइम तुम जानि छ फाउंडिंग फिगर और सोशियोलॉजी को सी
फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट को आ जाए अगस्ट कमटे कर्म सोशियोलॉजी को स्टार्ट करते एवं मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजी को केमिति स्टडी करा जाए सेटा शिखेथिले डरखाई while Durkheim a founding figure in the sociology in his classic work less suicide less suicide ସେଇଥିରେ ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଅଫ୍ ସୁସାଇଡର ଫର୍ଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ନଟ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ ସାଇकोलॉजिकल ଆକ୍ଟ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ ସାଇकोलॉजिकल ଆକ୍ଟ but as a social phenomenon influenced by the relationship between the individual and society क्या आवाज आसी ऑडिट होनी गोटे सेकेंड ठीक हो ओके रे सुइसाइड ସେଇଥିରେ ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଦେଖ ସୁଇସାଇଡଟା ହେଲା ଭିଜୁଆଲ ନୁହେଁ ନା କି ସାଇकोलॉजी ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ସୁସାଇଡ୍ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଫେନୋମେନନ୍ ନୂଆ ଫର୍ମ କହିଲେ କି ସୁସାଇଡ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ହେଉଛି ନା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ରିଲେସନ୍ somehow true the individual and the individual and society ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ ଯୋଗୁଁ ये सुइसाइडटा ହେଉଛି नॉट विजुअल और साइकोलॉजी Durkheim classified suicide based on two factors degree of social integration and second was degree of regulation integration or degree of social तो suicide कौन define कले Durkheim कहले suicide कौन ना all cases of death resulting directly or indirectly from a positive or negative act of the victim himself which he knows will produce बुझीगला ना बुझी जार जो लेट मी नो Durkheim defined suicide based on two side all cases of death डेथ जो हो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो तो फ्रॉम ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव एक्ट ऑफ ए विक्टिम किए जी सुइसाइड करुची तार पॉजिटिव एक्ट या नेगेटिव एक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कौन रिलेशन टू सुइसाइड टू Durkheim टाइप्स ऑफ सुइसाइड से कहले चारि प्रकार Durkheim फोर टाइप्स ऑफ सुइसाइड altruistic suicide too much integration ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଗୋଟେ integration ଆଉ regulation too much integration less not enough integration egoistic suicide altruistic suicide egoistic suicide देखि integration parameter एटा एटा too much integration more integration too much integration एटा very less integration enough integration and regulation is too much regulation this fatalistic suicide too much anomic suicide not enough regulation ये कंडीशन रे ही जने सुइसाइड करे देयर इज नो कंडीशन लाइक दिस वो एगुड़ा सब क्लासेस रे पढ़ाई छी कुछ आसी छी Durkheim आइडेंटिफाई फोर टाइप्स ऑफ सुइसाइड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सिंटी फर्स्ट ला टाइप्स ऑफ सुइसाइड social relation that is egoistic suicide low social integration egoistic suicide माने low social integration occurs when individuals are weakly integrated into society or community they feel isolated and lack collective support egoistic माने इंटीग्रेशन आई सोसाइटी रु से दूर रही
इंडिविजुअल सोसाइटी सहित इंटीग्रेट न होता है ये आइसोलेटेड फील करती एंड कलेक्टिव सपोर्ट भी यार एग्जांपल है हायर सुइसाइड रेट एमंग द अनमैरिड पर्सन्स सहित इंटीग्रेट होती प्रोटेस्टेंट्स और अर्बन पॉपुलेशन रो ये तार एग्जांपल नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्टिक जोटा कि इंटीग्रेशन ऊपर एक्सेस इंटीग्रेशन लेसर एक्सेस सोशल इंटीग्रेशन कौन इंडिविजुअल को स्ट्रांगली इंटीग्रेट करा जाए जो निज लाइफ छाड़ी सी अलग सोसाइटी कथा करने को जाए से अल्ट्रुइस्टिक कह जाए अल्ट्रुइस्टिक माने भल केस रे कह जाए गुलजार जी की देश मरुच नेशन फर्स्ट सती ट्रेडिशन जमती थिला सुइसाइड बम्बर अल्ट्रुइस्टिक देन सिमिलरली एनोमिक सुइसाइड लॉ सोशल रेगुलेशन सोसाइटी भीतर रेगुलेशन किसी किए जहाँ करुच्ची जिते सोसाइटी इकोनॉमिक कंडीशन न थाए सोशल कंडीशन न थाए इंडिविजुअल फील करे नॉर्मलेस एंड डायरेक्शन से कौन करिवो कौन नहीं ताको डायरेक्शन दबार नहीं जॉब लॉस हुए इकोनॉमी डिप्रेशन होता 1929 रे ग्रेट डिप्रेशन जो रैपिड सोशल चेंज हुए सही केस रे ये एनोमिक एनोमिक माने जोटे कि नॉर्म बाहर फाटलिस्टिक एक्सेसिव सोशल रेगुलेशन ओवर रेगुलेटेड तार फ्यूचर कंट्रोल सी जहाँ करें एक्सट्रीम प्रिजनर्स हैव और पीपल अंडर एक्सट्रीम अथॉरिटेरियन समझते बुझी पारछ नेक्स्ट explains of the social integration refer to degree by which individual feels attached to the social or collective life too little integration ego too much integration regulation refers to degree of external or normative control society exert on individual too little regulation anomic I made already dekhidele so Durkheim demonstrated that suicide rate vary across the group social group religion and society they call a social condition important not individual psychology social condition indicating that social condition not individual psychology alone influence individual किसी important नुह Protestant had a higher suicide rate से देखले देन कैथोलिक्स रे रेगुलेशन अधिका अछि रेगुलेशन कम अछि प्रोटेस्टेंट आमे देखले प्रोटेस्टेंट तुमर एठी देखि लॉ सोशल इंटीग्रेशन प्रोटेस्टेंट social instability example industrialization economic crisis increased economic suicide increased economic तो आम अलरेडी देखिस बेसी से अनुसार कहले कि सोसाइटी किसी सोसाइटी स्टडी कले गोटे कैथोलिक सोसाइटी आ गोटे प्रोटेस्टेंट से एरिया दी तीन पुलिस स्टेशन बुलिकी से जगह डाटा कलेक्शन कले कि केते लोक देखले प्रोटेस्टेंट एरिया रे बेसी लोक सुइसाइड कर ताले से भारी कि सोसाइटी ही सुइसाइड करुची Durkheim's typology remains relevant for understanding it ala relevance in the today this is very important don't write this not get the egoistic suicide among urban youth baby अछि economic suicide during financial crisis ग्रेट डिप्रेशन होता देन जॉब लॉसेस होता 2008 रे तुमरो क्राइसिस आईटी रे भी से भाया कंडीशन अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप्स Durkheim's classification of suicide reflects how social integration classification reflects how social integration and regulation shape individual behavior work transform the study of suicide from a personal issue to a sociological problem demonstrating the deep connection between individual action ये conclude एमती करिवो can you do or not
ये बड़े आंसर लिखि परिबो कोन कहउछ can you write it or not discuss the Merton's argument that deviance ये थिला तो सुइसाइड केते इंपोर्टेंट आमे रेलेवेंस सहित आमे लेखिलु जोटा कि तुमे मार्क्स पाइबारे किछि भी असुविधा हबो नाही सेंस रो रेलेवेंस पचारिनी बट आमे पढुचे माने तुमे केते केते क्वेश्चंस रेलेवेंस लेखेनी आगे रेलेवेंस लेखिले भी तुम फसी जिवो ओके नेक्स्ट पैटर्न्स रो deviance the Robert K. Merton's argument that deviance result not from pathological personalities but from the culture and structure of society. So Robert K. Merton, an American socialist, developed the strength theory of deviance. Developed the strength theory of deviance, also known as enemy theory, in 1930. Robert K. Merton he extended Emile Durkheim's concept of enemy. Durkheim प्रथम थर पे enemy देइथिले आमे देखिले enemy right a breakdown of social norm economic basically concept of enemy a breakdown of social norm to explain how social structure and culture values can lead to deviant behavior deviant माने जो नॉर्म रे थिबो से नॉर्म रो बाहर को जीवो आ ये चेला इमाइल डरखाइम ये चेला भले काम करती बेसिकली ये तांको बहुत फॉलो करती ओके how social structure and culture value can lead to deviant behavior. Merton argued that deviance is not primarily the result of individual pathology or abnormal personality, but rather a normal response to the pressure exerted by the social and culture. A very important point. ये कौन कहले मेटन कौन कहले डेविएंस इंडिविजुअल जो हुए इंडिविजुअल पैथोलॉजी जो और एबनॉर्मल पर्सनालिटी जो हुए कौन पाई हुए ना प्रेशर जो सोसाइटी दिए ताकू जो कल्चर आम स्ट्रक्चर कल्चरल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी अच्छी से प्रेशर जो सी डेविएंस बिहेव करे रेदर देन इंडिविजुअली सी बिहेव रेदर देन एबनॉर्मल पर्सनालिटी जो सी बिहेव तो ये भी समाव तुम्हें जमती डरखाइम भाया ये कहते से कथा सी cultural goals and institutional means. Merton noted that every society defines cultural goals, objective or aspirations that are desirable, that is success, wealth and status. The institutional means, the legitimate way to achieve, example education, hard work, lawful employment. First कौन एवरी सोसाइटी तार गोटे कल्चरल गोल अच्छी ऑब्जेक्टिव अच्छी एस्पिरेशन अच्छी जोटा कि डिजायरेबल लगे सक्सेस हो वेल्थ हो स्टाटस हो ये गोटे थाए भाई जार पैसा अच्छी बड़ माना जाए जी भल चाकरी कर माना जाए सक्सेसफुल माना जाए ये गोटे सब सोसाइटी गोटे गोल्स अच्छी देन इंस्टीट्यूशनल मीन्स द लेजिटिमेट वे टू अचीव द गोल केमी लेजिटिमेट वे माने जोटा कि समस्ते परसेप्शन समस्त अच्छी कि भाई एजुकेशन थ्रू हो पार हार्डवर्क थ्रू या lawful employment through then American society material success and upward mobility are strongly emphasized as cultural goal जार जते material success जार जते material घर बंगला गाड़ी and upward mobility are the strongly emphasized as a cultural goal. However access to legitimate means like good education through जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू रे करिवो ना कि गुंडागर्दी करी अनइक्वाली क्लियर बुझला बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल थिला stand between goals and means
An individual or group cannot achieve these culturally approved goal through legitimate means. So देखो तुम्हें सोसाइटी रे कहै छी भाई तुम्हें एजुकेशन थ्रू रे करिवो कहले भाई मु एते पढ़ी की एते करी की म कमै परिबिनी या मु बिजनेस करी जोटा कि से धंदा करी विजय माल्या धर कहला मतलब पैसा इनकम करिया बाय एनी मीन ओके सेते इंडिविजुअल से कल्चरली अप्रूव्ड गोल को फुलफिल करि न पारे या लेजिटिमेट मीन्स रो करि न पारे ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी हो ड्यू टू द एक्सपीरियंस स्ट्रेन और प्रेशर से जो सी कौन है नॉर्मलेस आड़ को जाए डिसजंक्शन बिटवीन द गोल्स एंड मीन ओके मीन्स आउ से फॉलो करि पारे नहीं या मीन्स आउ गोल्स रो अलगा हो जाए जेतेबेले जेतेबेले सोसाइटी जे फील करे सी कि भाई मु जो मेथड जाउची सेटा मु अचीव करि परिबी हेंस डेविएंस एमर्ज हुए रेस्पॉन्स टू द स्ट्रक्चरल स्ट्रेन नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअल मेंटल इलनेस और मोरल वीकनेस एक मानि नियो गोटे लोक देखला पिला बेलू ताकू सोसाइटी रे सब बासिंग कर सब ताकू हैरान करछथि से लोअर कास्ट से चाहूँ पढ़िया बट ताकू कहीं पढ़िया दो से चाहूँ माने सोसाइटी सोशल कल्चरली अप्रूव्ड गोल थ्रो रे सी अचीव करिवो बट ताकू करिया दौना से कौन करिवो अंडा उठेबो सेठू इंडिविजुअल डेविएंस हम तो डेविएंस केतले हबो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन या स्ट्रक्चर जोंटा थिबो सी तुमको करी आगु को बढ़िया दबो ओके इंडिविजुअल मेंटल इलनेस नो या मोरल वीकनेस नो ये तारो रेस्पॉन्स दबो तो डेविएंस पैटर्न मोड ऑफ इंडिविजुअल्स एडॉप्टेशन जोंटा कि ये कले कन्फर्मिटी माने एक्सेप्ट कले कन्फर्मिटी एक्सेप्ट कले डेविएंस देखो एक्सेप्ट कन्फर्मिटी कल्चरल गोल को एक्सेप्ट कले इनोवेशन ये कन्वेंशनल मीन्स थ्रो रे कले बट गोल्स के एक्सेप्ट कले बट मीन्स को रिजेक्ट कले से अलग वे रे कले नले इनोवेशन करि परिबोनी नवा जिंस केमती करिवो देन रिचुअलिज्म से रिजेक्ट कले कल्चरल गोल को बट एक्सेप्ट कले मीन्स को रिट्रीटिज्म both means and tomorrow goals cultural goal are rejected. So Merton's strain theory of deviance combining a person's view of cultural goals and conventional means to obtain them allowed Robert Merton to identify various types of deviance. Then एटा हला कोन न्यू गोल्स एंड न्यू मीन्स रिबेलियन या हमें पढ़ी छे तने हमें पढ़ी so these are cultural goals mean तो कन्फर्मिटी कौन ना मोस्ट पीपुल ए भी आमे समस्त जानिचु सोसाइटी जहाँ चाहे आमे सेहीटा ही करू सोसाइटी एग्नेस्ट जीवा कहार दम न थाए एंड मोस्ट पीपुल कन्फर्म विथ एंड मीन्स जो सोसाइटी जहाँ करूची मैरिज जो प्रोसेस से आमे चाहू के सेटा मेजॉरिटी पीपुल कन्फर्मिटी इनोवेशन से माने कल्चरल गोल्स जहाँ थाए ता पथर थांती बट जो प्रोसेस जो मीन्स सेटा को अलगा करता एक्सेप्ट सोशल गोल्स but use illegitimate means example choro fraud ritualism reject or accept माने individual give up goals goal आउ रखिला नहीं but rigidly follow means कोन ब्यूरोक्रेट होबा पई खास करके ब्यूरोक्रेट्स मानकर से गोल्स छाड़ देला but means काम करिया पड़ियो ताको सेही बळिया रिट्रीटिज्म रिजेक्ट कला बोथ इंडिविजुअल विथड्रॉ फ्रॉम बोथ दैट इज एडिक्ट्स एंड vagrants then rebellion हला न्यू गोल न्यू मीन्स इंडिविजुअल सीक टू रिप्लेस बोथ सोसाइटल गोल्स एंड मीन्स रिवोल्यूशनरी जो माने पूरा गोल आउ मीन्स बाहर cultural structural causes of deviance pattern central insight is that cultural emphasis success goals is but structural access to legitimate means is this inconsistency between aspiration and opportunities produce deviance. Thus, success of deviance lies in the proof. Cultural emphasis on success goal upre is universal सबुआडे but structural access legitimate means is the consistency between opportunity. Thus,
source of deviation lies not in individual. So key insight kon na deviance is socially produced. Deviance is socially produced. It emerges from structural strain. It emerges from structural strain between, है ना? Socially produced. Society itself create pressure rather than individual being inherently passive. And society's structure influence inequality, education हो, कम हो, strain कहे भाई सीए समस्त को पढ़ी पारछन आमे पढ़ी, leading to higher to deviance. So अलगा path रे जीवे सीए from disadvantaged group, middle upper class individual may innovate using white collar crime to achieve the goals. Not moral failure, but structural tension. Deviance is a rational response to some goals जे कि society को unify करे, wealth and success can produce deviance when access to means ହେଲା wealth and achieve करिया पे जो means अलग अलग हेले different जଣା पड़े difference जଣା पड़े समस्ते वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु गोटे सांगसाथी सहित तो व्हाइट कलर क्राइम तार एग्जांपल है एम्बिशियस प्रोफेशनल कमिट फ्रॉड एक्चुअली ये टॉपिक तुम्हें जदि पढ़ी नथिबो ठीक से ताले एटा तुम बुझिया पे डिफिकल्ट बिल्कुल पढ़ी नथिबो अलगा सब्जेक्ट के बुझी पारिबो ये टिके माने समय गुटे मते 2 घंटा 2.5 घंटा लागे ताको बुझिया पाई तो तुम्हें सांगे सांग बुझी पारिबो नाही टिके तुमको डिफिकल्टी होउतो तो मैटर्न्स रो डेविएंस थ्योरी ट्राई करो या पर फंडामेंटली बुझी जाओ खाली सब नॉलेज सब क्वेश्चंस करके आंसर करके जदी बुझिबो तो जो से बारंबार कहे जो मैंने पढ़ी एटा तो व्हाइट कलर क्राइम फ्रॉड और embezzlement due to pressure, street crime among the poor, theft or drug trafficking due to limited legitimate opportunity, rebellion, social movement like Indian independence, activists challenged existing societal ओके तो फाइनली आम जो देखा पैटर्न्स थियोरी शिफ्ट द फोकस फ्रॉम इंडिविजुअल पैथोलॉजी टू सोसाइटल डेविएंस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द टेंशन बिटवीन कल्चरल एक्सपेक्टेशन एंड आम सोसाइटी को बाय अंडरस्टैंडिंग डेविएंस एज सोशल प्रोड्यूस पैटर्न हाइलाइट द नीड फॉर ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्ट्रक्चर को रिफॉर्म कर कौन इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर इनइक्वालिटी रहिले डेविएंस हम एक्सपांडिंग द अपॉर्चुनिटी समस्त को दियो और प्रिवेंट डेविएंस एटा बहुत बढ़िया पॉइंटा तो मु जानी तुमको जी फर्स्ट टाइम एटा देखुथबो ताको बुझिया पे डिफिकल्ट काहे ना इट रिक्वायर एटलीस्ट 2 आवर्स टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ता पई पढै छी क्लासेस रे पढिले जानि परिबे देन आज एटा लास्ट क्वेश्चंस आज एटा लास्ट क्वेश्चन देखिबा कार मेसेज आसुनी काहे मु देखुची कार मेसेज आसुनी गाइस तो class theory the premise that the history of all hitherto existing society is the history ये गले प्राय इतिहास ही क्लास स्ट्रगल एवं तापई से बुझेइथिले इतिहास ही क्लास स्ट्रगल रे तापई से बुझेइथिले कार्ल मार्क्स ये तांकर बुक्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के 1848 लेखि का से मिसी की फ्रेडरिच एंजल से मिसी की से लिखी द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथ्रीटो एक्जिस्टिंग सोसाइटी ये जो लेखा है जो क्वेश्चंस पचारी एटा पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो देखिले तार declare that the history of all hitherto existing society is the history of class struggle. Statement capture the essence of Marx's materialistic conception of that the evolution of human society is fundamentally shaped. कौन से कौन कही तो हिस्ट्री गोटे कि पूर्व सी गले पूर्व से प्रूफ करते
प्रूफ करथिले कि भाई अर्ली कम्युनिस्ट थिले देन कम्युनिज्म परे आसिले फ्यूडाली स्लेव सोसाइटी देन स्लेव सोसाइटी परे फ्यूडल सोसाइटी परे तुमरो इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये कहले कोन स्टेटमेंट कैप्चर द एसेंस ऑफ मार्क्स materialistic that evolution of human society is fundamentally shaped by conflict between class कहले सोसाइटी इवॉल्व होई क्लासेस विथ कॉन्फ्लिक्ट है कि from their economic relation to from their economy relation the means of production. Okay, Marx historical materialism. Karl Marx analysis is rooted in historical materialism. He asserted that the economy base, that is means and relations of production, determine the ये कहले सबुथिर मेन पैरामीटर कोन इकोनॉमी ए सुपरस्ट्रक्चर कौन चाहे पॉलिटिक्स हो लॉ हो आइडियोलॉजी हो रिलीजन एवरीथिंग तांको हिसाब रे कौन ना मीन्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड तार बेस कौन ना इकोनॉमी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन social classes that emerge from differing positions in the economic structure. In every mode of production, society is divided between those who own the means of production and those who work. Every mode of production एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन है सोसाइटी दीटा प्रकार डिवाइड होती जड़े प्रोड्यूस करिवो आउ जनक पई प्रोड्यूस करिवो राइट स्टेजेस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द हिस्ट्री प्रिमिटिव कम्युनिज्म नो प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो कॉन्फ्लिक्ट करथिले प्रिमिटिव कम्युनिज्म नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एही समय नो प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्स वर ओनली ओन्ड नो क्लास एंड देयर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट प्रथम स्टेज रे से कहले कॉन्फ्लिक्ट सेकंड स्टेज रो स्टेप्स एटू एमर्ज होला प्राइवेट प्रॉपर्टी स्लेव सोसाइटी एमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी डिवीजन बिटवीन मास्टर ओनर ऑफ द स्लेव एंड द स्लेव हु प्रोवाइड द लेबर एटी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होला एटू स्टार्ट होला तांको हिसाब देन फ्यूडल सोसाइटी लैंड बिकम्स द मेन मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉर्ड्स लैंड ओनर एंड द सर्फ हु वर्क इन द लैंड देन कैपिटलिस्ट सोसाइटी industrial production is dominates capitalist society division between bourgeoisie the owner of the capital or and means of production je production करूची और सदा capital means of bourgeoisie and proletariat wage laborers तांके भीतर the bourgeoisie exploit the surplus value created by the work and future communist ये की predict करते कार्ल मार्क्स so after a proletariat revolution जो proletariat थिले को exploitation होची some point of time ये revolution करिवे and private property and class distinction abolished और रहिबो नाही classless stateless exploitation free society would be ये कार्ल मार्क्स रो प्रेडिक्शन कोन भाबुच प्रेडिक्शन हवा फुलफिल किछि मात्रा रे रशिया रे ट्राई करथिले कम्युनिस्ट सरकार आस्तिला बट सक्सेसफुल हेई पारि नथिले समस्त ओटे लाइक करो शेयर करो सांग साथी and nature of class struggle on a class struggle is not merely economic it extends to political and ideology the state in Marx view kind of class domination state hela tar kamala tar dominate kariyo class domination a tool through which ruling class maintain its economy yes एटा भी तुम्हें एबे भी मन जे शासन करूची ता पाखर इकोनॉमी इंटरेस्ट से रोल करूची से डोमिनेट करूची revolutionary change occurs when change हबो the forces of production करिया पई जो एफर्ट दिया होची outgrow the relations of production leading to class conflict criticism of class theory केवल से कहले इकोनॉमिक से कहले ओवर एम्फासिस ऑन इकोनॉमिक फैक्टर आउ नेग्लेक्ट कले कल्चरल पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मिडिल क्लास एक्सपेंशन emergence of large middle class in the modern capitalist society has blurred the strict division between bourgeoisie kale bourgeoisie je ki owner of the land owner of the property owner of the capital and as well as proletariat labor ta majre jo middle class emerge hele ta kotha then peaceful reform many capitalist society je ki achieve social progress through reform not revolution
रिवोल्यूशन कथा कहते चैलेंजिंग मार्क्स प्रेडिक्शन ऑफ इनएविटेबल क्लास कॉन्फ्लिक्ट की चैलेंज करता था कॉम्प्लेक्स क्लास स्ट्रक्चर कंटेम्पररी जदि आम देखा सोसाइटी बहुत सारा क्लास मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी देखला हमें बेस्ड ऑन जेंडर बेस्ड ऑन रेस बेस्ड ऑन कास्ट बेस्ड ऑन मार्क्स ए मान को कहा को धरी and contemporary relevance despite the criticism marks insight into the power inequality and modern analysis of income inequality corporate dominance and labor rights often echo Marx emphasis on class neo Marx thinker like Gramsci neo Marx new Marxism thinker Gramsci and Althusser have expanded Marx's idea include the role of ideology, culture, money. As so these are basically relevance, contemporary relevance. Criticism केते एरिया में टच करूचे देखो केमती आंसर लिखा जीवो. Marx assertion that the history of all history to exist in society is the history of all purpose society is history of class struggle provided a profound framework for understanding the while his deterministic prediction have not materialized as of now पर्यंत सेटा material कराइनी the core idea that the social conflict arise from economic inequality and exploitation continue to illuminate the dynamics तो ये आज पार्ट ये सोशियोलॉजी रो फाउंडेशन बैच जॉइन करिया चाहूचंती दीटा क्लास ऑलरेडी नै जी पेपर 2 रो स्टार्ट करिछि गोटे दीटा क्लासेस हे गलानी यू कैन जॉइन वेरी लिमिटेड प्राइस रो अछि वेरी लेस प्राइस रे तमे निज इंडिविजुअली गाइड सब पाई परिबो बहुत जरूरी को समय बर्बाद करबा अपेक्षा गोटे गाइड पाइले आपन को हेल्प हबो एंड एज वेल एज सोशियोलॉजी ऑप्शनल मेंटरशिप जो माने पढ़ी सारी चंती तांको पई एटा बेस्ट हबो कि टेस्ट सीरीज पाइबे एज वेल एज मेंटरशिप पाइबे मेंटरशिप रे मु एवरी यूनिट वाइज एबे पीवाई को डिस्कशन करछि एवरी 10 वर्ष पीवाई को एज वेल एज यूनिट वाइज आपन को क्वेश्चंस करेबी तार वैल्यू एडिशन दैट्स इट फॉर टुडे गाइस थैंक यू एवं मेंस पाई जो ये जीएस प्रोग्राम भी अछि जीएस रो टेस्ट सीरीज 26 अक्टोबर स्टार्ट होची ऑलरेडी तार मेंटरशिप चली या परे मु क्लासेस नो तार टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट अछि मात्र 4000 5000 एवं 4000 मेंटरशिप से भी वैल्यू एडिशन सहित जीएस रो चारिटा जीएस रो दिया जीवो मात्र 8000 सो यू कैन जॉइन टेस्ट सीरीज खाली 5000 से भी चैनल जॉइन करि परिबे या मेंटरशिप 4000 9000 होची आपण 8000 बहुत कम प्राइस रे आपण जॉइन करि परिबे सो डू कांटेक्ट 892 फॉर मोर डिटेल्स थैंक यू फॉर नाउ जय जगन्नाथ